क्या था अजय, क्या हो? आफ्टरनून वाला सेशन कैसा है वैसे? ठीक लग रहा है? नहीं, टाइमिंग आफ्टरनून सही है, ठीक है। नमिता इज लाइक कि नहीं है। एंड वेयर आर दिस टू बॉयज? अच्छा 23rd को आएगा क्या? ओके, मुझे लगा मंडे कोई ऐसा ये होगा। ओके चलो, कुछ टास्क वगैरह दिया था ऐसे कुछ? नो, किस लिए? किस लिए? बोलेगा नहीं पर यही तो। अच्छा चलो ठीक है, पूछ लेंगे, पर पता चले बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो, अदरवाइज पूछने के लिए और लगेगा उसको। अच्छा 17 पे मतलब खतरा हो गया उसको। हाँ? इसी टाइम रखना है। जीएस में अब आपका बचा ही क्या है वैसे भी? लोगी आप पर क्लास करोगी रेगुलर? हाँ यस आई नो। चलो सो स्टार्टिंग विद ना फिजिकल सेटिंग्स है ना। पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी तो हमने कंप्लीट कर लिया था। मॉडल्स एंड थ्योरीज एंड लॉस आई टोल्ड यू कि हम उसको सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन थ्योरीज, देन जियोपॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिकल थ्योरीज, देन और कौन सा था, and location, industrial, agriculture location. So this is how we are going to deal with respect to those theories. Now time is for physical settings of India, है ना, that paper 2 unit first, so that unit, and I think आज मंडे है ना। मंडे के दिन वैसे कुछ रेगुलर होता है वैसा कि काजल मंडे के दिन का वेट करती है कि कुछ चीजें बतानी होती है, सिलेबस के यूनिट्स, एसडीजीज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ अब नेक्स्ट मंडे आउट नहीं वैसे दिन फिजिकल सेटिंग्स चलेगा तब तक आओगे। अच्छा ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं देन इंडिया एंड एज यूजुअल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देन सिलेबस का एक्सटेंड पता है वैसे? चलो सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर लाइक गोइंग फर्दर इनटू द डीप अबाउट दिस इंडियन ज्योग्राफी, पहले हम देखेंगे इंडिया। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंडिया? जो मैंने आई गेस कुछ दिन पहले भी पूछा था वैसे आप लोगों से कि इंडिया क्या है।
आकाश होता तो ही वुड हैव गिवन समथिंग डिफरेंट आंसर, है ना, क्योंकि उसने मतलब कुछ बोला था कि सर मैं कुछ सोच लूंगा उस पर बताऊंगा। तो कोई आइडिया है अबाउट इंडिया कि क्या है इंडिया? इंडिया इज लैंड। और इंडिया इज a land stretched from Jammu Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Arunachal Pradesh. Okay. In which Haryana is a state. Then देखो इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना, मतलब अगर किसी को इंटरव्यू मतलब क्वेश्चन पूछना ही है और मेरे जैसा अगर कोई बंदा रहेगा तो मतलब पूछेगा कि हाँ मतलब यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट हो रही ना अबाउट इंडिया, द कंट्री, द रीजन, द नेशन दैट यू आर गोइंग टू सर्व, राइट? तो वो क्या है पता तो होना चाहिए आपको, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो तो समझे। आंसर आ रहा है, ओह ग्रेट। तो कुछ और टाइम चाहिए उसको, क्या आ गया है? South is a South Asian country, seventh largest country. It is culturally, it is sir उसको क्या बोलते हैं? It is rich in culture. और अभी तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं सर? Rich in culture and have different physical features as well. और हिस्टोरिकल बेस में देखे तो भी इसकी फॉर्मेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बहुत वास्ट है। और कल्चर तो हो गया। सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर जब हम इंटरव्यू में देंगे तो हमारे पास में पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का हर कोई क्वेश्चन यू नो इट इज नॉट रियली यू गाइस आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर, तो आपकी पर्सनालिटी वो वैसे रिफ्लेक्ट करेगी। सो बोलना पड़ेगा हमको, बताना पड़ेगा। हाँ मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनके लिए भी जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह वो फोकस ऑफ अट्रैक्शन मतलब है अभी के टाइम में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स फोकस ऑफ टूरिज्म। मेरे पॉइंट तो आएंगे अभी, रुको पहले आप आपके पॉइंट पूरे बता दो, फिर बताना सही बता रहा हो या मैं नहीं बता रहा। कि मैं फिर पॉसिबली ट्राई करूंगा क्या दैट यू गाइस देन यू नो वुड गेट टू न्यू अबाउट सम डिफरेंट इंडिया एंड यू विल then appreciate, I believe that the very understanding of India then. इंडिया इंडिया मैंने पूछा है व्हाट इज इंडिया, है ना? पॉजिटिव पॉइंट्स है बिल्कुल। हाँ 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 क्यों नहीं, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, है ना? हाँ
Youngest country as well. राइट और तो पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही है. चलो ठीक. अब देखो what I feel India is maybe like, see, India is highly subjective concept. The way you see it, the way you feel it, right, the way you understand it, it only reflects you, it's nature in that particular way. जैसा no doubt India is South Asian country hai, one of the largest even in South Asia, seventh largest in the world, most populous country in the world, which hosts the youngest population as well, right? Apart from this कि India third largest economy भी बनेगी या fifth largest economy आज है, one of that country which has huge bio or physical diversity as well. But apart from all this aspect, see, India is, I believe, it is something different. India is not merely a land of mass and flesh. Huh? India सिर्फ अगर if you consider India is merely a land of mass and fleshes, like organic matter है या human beings के सिर्फ चलते फिरते 140 करोड़ लोग हैं. No, India is not a land of mass and flesh. India is rather that energy that keeps this 140 crore Indians, always alive and active. India is not merely an extension of Jammu and Kashmir to Kanyakumari or Gujarat to Arunachal. It's rather a tract of energy that always guided the whole of world to ensure its true development, yes, sustainable development. India is not only having history. India is history, India is present, and India is future as well. It is not only country ki jahan pe there are only 140 crore individual or like having a diversity of physical features. It is rather a country that is a cradle of civilization. If you remember, हमने तभी भी लिखा था Indo-Gangetic Earth is known as is one of the richest realm in the world. जो उस पे हमने content लिखा था in the last session itself. So India is not merely a plain civilization, or India is not merely a country or region where human beings or different forms of lives are inhabited. But this forms or this region is rather something which is an idea in itself, which is ideology in itself. India मतलब क्या है? India is a fountain of energy. India is rather a fountain of ideas. India is rather a fountain of innovation itself that guided the rest of the world since ancient past and even nowadays as well. तो इंडिया बेसिकली अगर सिर्फ इंडिया को अगर फिजिकल डेटा या फैक्ट्स में अगर काउंट करोगे तो इंडिया आपको कभी समझ नहीं आएगी. इंडिया इज नॉट मेयरली ए दिस factual aspect. India is something to feel about. India is something to realize in its true potential. So that is what India is. समझ आया कुछ? हाँ काजल कि ये हिसाब से कि सर कुछ अलग लगा इसमें क्या वही वाला है इंडिया? अगर सोचो जस्ट लाइक यू गाइस आर नाउ पैनलिस्ट राइट, एंड इफ यू आस्क समवन और उसने ऐसा आंसर दिया तो कुछ थोड़ा सा अलग लगेगा उसका ओपिनियन, उसका अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार फॉर हिम इंडिया इज नॉट मेयरली a tract of soil, it is rather something that always keep energizing, that always is rather reproductive and regenerative in nature itself, है ना? So chalo now do note down, start this thing itself. India, chalo do note down.
हाँ जैसे मतलब जीएस की पूछना था वो करवा रहे हैं मतलब वो मैंने आपसे पूछा था जैसे मैं भी हमारी क्लास में हाँ तो अब तो सीरीज लगा रहे हैं तो उसमें मैं काफी है तो उसके क्वेश्चन छोड़ भी देंगे छोड़ क्यों देंगे ये यूपीएससी में कैसे बताओ ये हमारी मैपिंग हुई नहीं है मुझे लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशन करंट कर लिया था वर्ल्ड डेजर्ट कर लिया था वर्ल्ड माउंटेन्स है मैप नहीं देंगे मैप में आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर तो फिर ये होगा एक रीजन का नाम होगा कौन से कॉन्टिनेंट में एक रिवर होगा कहाँ पे ड्रेन कर रही है एक रिवर है कहाँ ओरिजिन कर रही है एक रिवर है वो उस पर डैम कौन से कंस्ट्रक्टेड है एक रिवर है इन द करंट अफेयर्स कहाँ पे लोकेटेड है गोलन हाइट रेसेंट इज इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट तो ये है पीवाईक्यूज देखो ना तो तुमको आइडिया आएगी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है अफगानिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अराउंड द अफगानिस्तान which of the following countries are neighbor to the Ukraine which of the following country does not open to the Mediterranean Sea which of the following country open to the Mediterranean Sea ये सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है यस जो पूछे है तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो अब देखोगे कि इसमें मतलब आपको समझ आएगा कि फिर रीड कैसे करना वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो मुझे लगता है जितने लेने थे आपके सारे मैपिंग ले लिए मैंने याद करना एक बार इतने सारे प्रैक्टिस कर दिए उसके वर्ल्ड मैप ओशियन करंट्स है उसके बाद वर्ल्ड माउंटेन वर्ल्ड रिवर्स है बाकी ये सारी वर्ल्ड रिसोर्सेस वाला कुछ वो भी किया है तो देखो एक बार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना चीजें तभी तो होगी अब इंडियन वाला केस है तो देख लेंगे उस पर सेशन ले लेंगे उस पर चीज अगर हो तो वर्ल्ड ही याद नहीं होंगे अपने रिवाइज ही नहीं किए तो कैसे याद रहेगा बताओ तो हाँ तो आपने फ्लो डिस्टर्ब किया ना एंड लाइक जब आप पे अब चीज आने लगी तो शी इज लाइक कि सर चलो इंडिया यस इंडिया as a political nation India as a political nation covers an area of covers an area of 32.87 square kilometer lakh square kilometer 32.87 lakh square kilometer lakh square kilometer with the seventh largest country in the world it is considered as a tropical temperate country it is considered as a tropical temperate country with a huge temperate tropical dash temperate country with a huge topographical diversity topographical diversity extending from the snow covered Himalayan heights the snow covered Himalayan heights to the tropical rainforest of the south to the tropical rainforest of the south it is rainforest of the south it is equally rich in the resources equally rich in the resources that is water
minerals, fossil fuels, which makes it the top 5 economy of the world. Top 5 economy of the world. And the country as most populous, inverted comma, top 5 economy को भी inverted comma करना और most populous as well. However, next line में लिखना, however, India is not only about India is not only about it's only about facts. It's not only about facts, but it's something about to feel, but it's something about to feel, to realize, and understand. Understand and understand. Next point. It is not merely a land of soils and soils, sand and silt. ऐसे लिखो. It's not merely a land of sand and silt, but a fertile tract where world changing ideas originated. Next line में लिखना, it is not merely a land of mass and fleshes. Mass and flesh, not fleshes, mass and flesh, comma. But a land of innovative philosophies and ideas. Innovative philosophies and ideas led to the revolutionary change in the human life. Led to the revolutionary change in the human life. India is a fountain of energy. Next line. India is a fountain of energy that keeps on energizing the rest of the humanity.
इंडिया, नेक्स्ट लाइन में लिखना है सारे जैसे पॉइंट्स बन रहे हो. इंडिया इज नॉट ओनली द प्रेजेंट. इंडिया इज नॉट ओनली द प्रेजेंट, but it is the glorious past. But it is the glorious past and the bright future of the world. Glorious past and the bright future of the world. Thus, next line. Thus, India is not simply a political nation, not simply a political nation, or a physical attribute over a space, or a physical point or attribute location over a space, physical location over a space, but it is something that kept the world united, guided, and prosperous. And prosperous. ठीक है. यस, देखो तो कुछ डिफरेंट था इंडिया. हाँ, जो आपने इंडिया बताया उससे कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंट है कि 7th लार्जेस्ट, ये तो पूरे वर्ल्ड को पता है, तो सारी चीजें पता है. उसमें पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव एट्रीब्यूट ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, बट एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव तो बता ही सकते हैं. इट इज रादर समथिंग a cradle of civilization, idea, innovation, thoughts, and those things. Sure, ठीक है. So this is about India. Now, इंडिया पे अच्छा एक और पॉइंट्स होना चाहिए था जो हो जाएगा. फिजिकल जियोग्राफी. ना, अब यहाँ से आगे स्टार्ट होगा सारी चीजें जो आपको फैक्ट है. देखो, वन थिंग अगेन दैट physiographic division or physical setting as a topic is much factual topic. ठीक है, it is much factual topic as in, अब ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, बहुत सारे नाम्स आएंगे, बहुत सारे लोकेशंस होंगे, रीजन्स होंगे, एंड मे बी कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी. सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड योर माइंड एज वेल कि ऐसी कुछ चीजें इसमें आने वाली है. ठीक, अदरवाइज ये सोचोगे कि सारी चीजें कंसेप्चुअली चलेगी या सारी चीजें ऐसी चलेगी, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे फैक्चुअल लोकेशंस रहने हैं. हिमालय के सीक्वेंस क्या है, या माउंटेन रेंजेस कौन सा है, या रिवर्स कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से फ्लो कर रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एवरीथिंग एज ना. सो देखो इंडिया, again the same facts about vast country, 7th largest economy, 32.87 lakh square kilometer of area, stretch almost like say for this much of extent, right? इसका north और south extent देखो इतना है, this way
then it is seventh largest and occupies 2.4% of the overall area. It occupies 4% of the water or overall water on the earth's surface. Then it hosts 18% of world population. ठीक है, ये है इस पे, और जो फैक्ट आपको चाहिए थे तो फैक्ट और भी ले सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट है इंडिया। ओवरऑल जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर है, 6,000 ऑलमोस्ट ऑफ द मेन लैंड है, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, एंड आइलैंड जो है हमारे पास 2000 ऑलमोस्ट 1200 इन नंबर और इवन मोर। तो दो आइलैंड की जो ओवरऑल कोस्टल लेंथ है समवेयर अराउंड 1576 किलोमीटर्स, दैट इज व्हाट द लेंथ। नाउ इंडिया इज हैविंग टू मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किपेलागो, एक है लक्षद्वीप दैट इज एनीवे इन द करंट अफेयर, और एक है अंडमान एंड निकोबार दैट इज अगेन बेसिकली इन द करंट अफेयर्स, रहता ही है वैसे अदर टाइम। Now, next है, हाँ, one thing, India is again North Hemispheric country, right? And India is East Hemispheric country. So on that count, India is basically Northeast Hemispheric country. ठीक है, North में भी है, East में भी है, that's why it is what Northeast Hemispheric country and tropical as well. Then India time zone, ठीक, अब टाइम जोन आपको पता है क्या होता है, सारी चीजें तो आपको सारी कुछ सब कुछ चीजें पता है। तो इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स, दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड टाइम जोन दैट पासेस थ्रू इंडिया, दैट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट इज लाइक रिप्रेजेंटेड एज +5:30 GMT और ITC, मतलब GMT से जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे ये 5 hours 30 minutes ahead है, right, lying on the eastern side, that's why this is what the case. The IST passes through मिर्जापुर और वाराणसी विक्रमगढ़ फोर्ट, वहां से ये पास हो रही है, और फिर वहीं से this time zone is rather considered to be a time of the whole of India itself, है ना। तो हमारे वॉच में अभी जो टाइम हो रहा है वो एक्चुअली दिल्ली का नहीं है, that is rather of मिर्जापुर, और यूपी वाला जो टाइम है वो है। सेम टाइम जोन फॉलो करता है श्रीलंका एज वेल, श्रीलंका में भी यही टाइम जोन है, दैट इज रादर फॉलोड, तो टाइम ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज, अब इंडिया हैज डिफरेंट बाउंड्रीज आज, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। इफ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था इंडिया के बॉर्डर रिलेशंस विद द नेशन, अदर रीजन और नेशंस, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार, इंडिया अफगानिस्तान, है ना। ये सारे कुछ रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो द इंडिया इज अगेन अ कंट्री व्हिच होस्ट ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट नेबर्स। इट शेयर्स अ बॉर्डर विद द 7 डिफरेंट नेबर्स, एंड द Bangladesh is rather the nation with which we share the largest boundary as. बांग्लादेश के बाद है चाइना, चाइना के बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आएगा नेपाल, देन भूटान, देन अफगानिस्तान, म्यांमार, सॉरी, हाँ, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। दोज आर व्हाट दी दो स्टेट्स हैं जहां पे ये बॉर्डर शेयर हो रही है, और इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है ना, याद है सर? तो वो सारी चीजें इस पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, इंडिया स्पेस रिलेशनशिप और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट्स, उस वाले हेड में हमने उसको ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है। सो देखो ये पॉइंट्स है सारे अबाउट इंडिया इटसेल्फ। ना इंडिया बेसिकली ये हो गया ना, यही तो था, ये बेसिकली आपको जो पता था वो सारी चीजें तो यही पता थी आपको, तो एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब है इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन और सिंपली इंडियन फिजियोग्राफी। सो हैव दिस हेडिंग नाउ, इंडियन फिजियोग्राफी। अच्छा, इसको लिखने के लिए कुछ आप स्पेस रख दोगे, दैट अर्लियर दैट स्लाइड बाद में लिख दोगे पूरा जगह, देखो अब आपके हिसाब से, मतलब ये है कि लिखना तो है आपको वो चीज, एंड देन डिक्टेशन भी मुझे देना है, तो फिर वो भी अकॉर्डिंगली। वैसे पीपीटी में सारी कुछ कंटेंट है।
कहीं पे भी लिख दो, चाहे तो 2 से 4 लाइनें, बाद में उसको वहीं पे पुट इन कर देना, है ना। इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन और इंडिया फिजियोग्राफी। Physiography, yes, physiography is the branch of study. Physiography is the branch of geographical studies wherein different topographic features, and their particular studies in depth help us to understand about the overall region. We can consider it as a regional geography. Where a region and its study is at the center. Where a region and its study is at the center. Region and its studies are at the center. लिखना. Next line. Physiographically, India has been divided into 6 different major divisions. 6 different major divisions. as ये मैप ड्रॉ करोगे आप वहां पे, राइट. दिस मैप ऑफ इंडिया, हिमालय उसमें फर्स्ट है, देन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर इंडिया है, देन कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है, और एक हो गया डेजर्ट. ठीक है, तो 6 डिविजन्स है जहां पे आप उसको मैप के टर्म में प्रेजेंट करोगे. गेटिंग? यस. सो फिजियोग्राफी इज सिंपली दैट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी जहां पे हम किसी भी लैंड को फर्दर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इट्स टोपोग्राफिकल फीचर्स. लाइक अगर इंडिया को इफ यू सी राइट फ्रॉम लाइक हैव अ टॉप व्यू ऑफ इंडिया एज अ लैंड मास, तो क्या हो गया, यहाँ पर कुछ फिजिकल फीचर्स आर वेरी क्लियरली आइडेंटिफिएबल. दे आर वेरी क्लियरली like identified as, and like Himalayas, that is known as the Great Wall of India. देन नॉर्थ प्लेन है तो वहां पे प्लेन वाला स्ट्रक्चर है, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ये सारे रीजन you'll find they are having very different physical appearance and geological presence as well over on the surface, and that gives it a separate study or understanding about the region. तो अब इसमें से देखो सबसे पहला जो रीजन है हमारा, that region is simply the हिमालयास. सबसे पहला जो रीजन है हमारा सी. अच्छा हाँ, वन थिंग अगेन इन एडिशन, अब अगर इंडिया को फिजियोग्राफिकली अगर डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, विल फाइंड देखो मेजॉरिटी जो एरिया है बिट्टू कितना है. ओके, सी प्लेन 42.6%, देन माउंटेन्स ऑलमोस्ट 10%, प्लेट्यूज मस्ट बी 35 to 40%. ठीक है, इसका ऑलमोस्ट इतना ही होगा, कितना होगा देख लेते. हिली एरिया लाइक ऑलमोस्ट 18.8%, 11, 18
0.8, 19, 19 and 11, 30, 30 and 40, 72, 72.6. तो ये होगा ऑलमोस्ट 28%. ठीक है, ये होगा ऑलमोस्ट 28%. सो इन इंडिया these are the different physiographic division और उनका एरियल एक्सचेंज दे रखा है. गेटिंग? तो सबसे ज्यादा देखो हमारे पास में स्ट्रेच है प्लेन्स का, देन उसके बाद आएगा प्लेट्यूज, देन हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज. ठीक है, अब हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज में हल्का सा डिफरेंस देखेंगे ना. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन. तो काजल क्या है हिमालयस? इंडिया तो आपने बता दिया, हिमालयस और भी बताना पड़ेगा क्या है हिमालयस. पहाड़. ओके, मतलब माउंटेन रेंज है, कोलिजन की वजह से बना था, मतलब अपलिफ्टमेंट होती है. अच्छा, माउंटेन रेंज और माउंटेन पिक्स में या कॉर्डिलेरास में कोई डिफरेंस होता है? हमने जियोमॉर्फोलॉजी में किया था ना. हाँ, कॉर्डिलेरास ग्रुप ऑफ माउंटेन ऑफ सेम ड्यूरेशन टाइम. हाँ, सेम एज ग्रुप के जो माउंटेन पिक्स होते हैं. देन माउंटेन कॉर्डिलेरास, माउंटेन रेंज, माउंटेन पिक्स या समिट जिसको बोलते हैं, है ना. एक इंडिविजुअल पिक होगा, एक और था हिल्स, हिल्स, और एक था मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम. माउंटेन रेंज, माउंटेन कॉर्डिलेरास, माउंटेन माउंटेन रेंज. ठीक है, एक बार देख लो. वैसे लाइक ऑलरेडी वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस थिंग इन जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं हमने ऑलरेडी कर लिया. हाँ, माउंटेन सिस्टम भी तो एक होता है. माउंटेन सिस्टम मतलब दैट सिंपली लाइक ए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स दैट इज रादर फॉर्म ड्यूरिंग अ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. ओके, तो चलो ठीक है, मतलब आपको यू गाइस आर नाउ अवेयर अबाउट कि इसमें डिफरेंस क्या है. देन फिर हिमालयास क्या है? अगर इतना ही नाम, अगर सिर्फ ये, अगर सिर्फ नाम है तो फिर आसपास में दिख रहा है आपको किसी का नाम है हिमालयस? हिमालय शर्मा, हिमालय वर्मा, हाँ, हिमालय गुप्ता, देखा है किसका नाम? हिमाद्री. अच्छा, कुछ लोगों का कुछ हो सकता है. हिमालय कहा किसका लिखा है वैसे? अभी मैंने तो नहीं सुना नाम, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं पता. अच्छा, देखो हिमालयास, इसका अगर रूट वर्ड देखोगे, मतलब इफ यू डिवाइड दिस टर्म, तो हिम आलय है ना. तो हिम इट मींस स्नो, राइट. आलय इट मींस अबोर्ड या स्टोरेज या कवर. सो हिमालय इन लाइक दैट सेंस इट इज ए ice or snow covered mountain, ice or snow covered mountain. This mountain is stretched almost for 2500 kilometers, 2400 kilometer more appropriately, from like the Nanga Parbat over in the Kashmir and Punjab till Namcha Barwa, that is in Arunachal. इसका और भी एक्सटेंशन है पूर्वांचल हिल्स एज वेल, वो उसका फर्दर साउथ में ले जा रहा है. सो दिस हिमालयास is actually a mountain system of 4 different chains of mountain. ये माउंटेन चेन मतलब ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड शिवालिक, राइट. इन चारों का मिलाकर ये एक सिस्टम बन रहा है, एक ग्रुप ऑफ रेंजेस दोज आर इवॉल्व ड्यूरिंग अ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, right. Those are known as Himalayan orogeny or orogenic processes, are actually a result of different time frame and of maybe a same process itself. ठीक है, हाँ, हर किसी के लिए अलग है बट फिर भी same process itself. Now this Himalaya is known as equally
the Great Wall of India. Himalaya is known as Great Wall of India. The reason being it's not merely a region or mountain that is elevated almost for 6,000 meters on an average, but it is rather something that protects India as well. Not even in security perspective, right? Maybe from aggressor, not even mainly basically from climatic perspective, but it is equally a protector of India's culture as well. क्यों? क्योंकि सिंपली है कि क्या हो गया, चाइना और इंडिया का कल्चर में डिफरेंस हो गया है. द रीजन बीइंग हिमालय इज लाइंग इन बिटवीन. अदरवाइज शायद ये होता कि इंटरमिक्स कल्चर हो जाते, जो आज भी है नो डाउट, बट उतने नहीं है जितने ये वैसे भी होते हैं. सो हाँ, जो ट्रांजिशन जोन में, फ्रंटियर जोन में बनेगा. अदरवाइज तो ये इंडिया का कल्चर अलग डेवलप हुआ है, चाइनीज कल्चर. अगर शायद हिमालय नहीं होता तो इंडिया का कल्चर डेवलप नहीं होता, या तो चाइनीज कल्चर डेवलप नहीं होता. मे बी एनीथिंग जस्ट कुड बी पॉसिबल, राइट? क्यों? क्योंकि फिर पैसेज वे स्ट्रेट हो जाता ना, क्लियर हो जाता. तो इंडियंस अपना, वैसे भी इंडिया का देखो बुद्धिज्म फिर भी चाइना में आज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन फॉलोड सेक्ट फेथ. जापानीज जापान में भी है, साउथ कोरिया में भी है. तो ये तो इन्फ्लुएंस हुआ है, बट स्टिल वी डोंट नो कि किस एंगल से या किस वे में ये डेवलप हो सकता था. सो Himalaya is not merely a mountain range. It is rather something that modifies climate, that's something that provides a security, that's something keeps it protected, culture evolution and protection further. It is something that is water security provided to the region as well. It is something that again is a reservoir of different resources, minerals and different energy means. Yeah. So Himalaya is this फिजिकल फीचर. बाकी इसके डिवीजन से वो भी करेंगे. सो हैव फ्यू लाइंस अबाउट द हिमालयस एंड देन उसमें इंपॉर्टेंस हो जाएगा अल्टीमेटली कि हिमालयस उसका इंपॉर्टेंस हो रहा है अल्टीमेटली, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हिमालय के डिवीजन्स. द हिमालयस इज द यंगेस्ट fold mountain chain. Highlight it or keep it capital the way you find it suitable. The Himalayas is the youngest fold mountain chain. Which is still evolving. Or in the mode of orogeny. The name derived from the name derived from the snow abode. The snow abode, ABOD, means or meaning a significant reservoir of ice. A significant reservoir of ice. फर्स्ट उसके बाद लिखना जियोलॉजिकली हिमालय इज, ये इंपॉर्टेंस चलेंगे अब इसके सारे, ठीक है? जियोलॉजिकली हिमालय इस स्लाइड में भी आपको इंपॉर्टेंस मिलेंगे वैसे. इज द मोस्ट डाइवर्स टोपोग्राफी, consisting summits, ranges, hills, valleys, summits, hills, valleys, gorges, gorges, etc. Second, climatologically
It is a modifier of the climate. Climatologically, comma, it is the modifier of the climate which helps to develop tropical climatic conditions in the India, and preventing intrusion of temperate conditions from the north, and preventing temperate conditions from the intrusion of the temperate conditions from the north. Ecologically, next point, ecologically, the Himalayas is one of the most biodiverse region on the surface. One of the most biodiverse region on the surface. Its high degree of endemism, helps to enrich and evolve further in new forms of life. Enriched and evolved further in new forms of life. New forms of life. Next, from the resource perspective, it is the net water security provider to the region. It is the net water security provider to the region. Water security. Net water security provider to the region. Comma. Also reached in forest-based resources. And equally mineral resources. Next, it is also energy security provider. By offering petroleum deposits, laid in various sedimentary basins, comma, newer forms of energy like wind, geothermal,
hydroelectrics, etc. Wind, geothermal, hydroelectrics, etc. Next, for India, it is the barrier which helps to keep prevention of different culture from any outside region, prevention of different culture from outside region, prevention of intrusion of outside culture, intrusion डाल दो ऊपर, prevention of intrusion of outside culture, and rather to develop its own unique unique endemic culture. Endemic culture. Next and last point. It is a net security provider for the region. It is a net security provider for the region. As historically, it diverted all military and invasion in the India. Invasion. Military and invasion in India. Hence it is rightly known as कैपिटल में लिखना द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया. ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया. ठीक है, इसी के इंपॉर्टेंस है वैसे, एंड मे बी एट द एंड ऑफ द स्लाइड एज वेल यू विल फाइंड और भी कुछ हिमालय के इंपॉर्टेंस होंगे. ठीक, देखो ये बाकी और भी इंपॉर्टेंस है ऑफ द हिमालय. यू गाइस कैन राइट इट ओवर हियर इटसेल्फ. ये वाला जो सन डायग्राम है, सो यू कैन यूज इट दैट ना. चलो अब देखते हैं देन दिस हिमालयस, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस. हिमालयन ओरोजेनी दैट इज एज वेल नोन है, और हिमालयन फॉर्मेशन. देखो हिमालयन फॉर्मेशन वैसे तो 6 स्टेजेस में चल रहा है, बना है. इट इज यंगेस्ट माउंटेन है. द प्रोसेस स्टार्टेड समवेयर अराउंड like 70 millions of years ago. 100 millions यहाँ से start होगा, but 70 millions of years ago you will find this process was actually started, and it went through the different phases of the upliftment, and now till in 2024 you will find ये upliftment process is rather still going on. अब देखो ये प्रोसेस हुई कैसे starting with the phase 1 100 millions of years ago. 100 millions of years ago. देखो क्या था, like during that time there was, if you remember, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसमें देखा था there was once like a unified landmass or super continent known as Pangaea, and there was only one super ocean known as Panthalassa. फिर Pangaea और Panthalassa क्या हुआ? Yes, Pangaea हुआ mainly, bifurcate हुआ, and it then gives rise to 2 different continents, Laurasia and Gondwana land. तो Laurasia तो खैर ये ऊपर वाला पार्ट था, this one, and Gondwana land was lying over here in the south.
गोंडवाना लैंड फिर क्या हुआ, विद द प्रोसेस ऑफ टाइम डिफरेंशिएटेड इनटू और गॉट फ्रैक्चर्ड इनटू डिफरेंट लैंड मासेस, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मैडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, राइट? दिस वेर द कॉन्टिनेंट्स ओवर देयर. What happened around 100 millions of years ago during the Jurassic period, Triassic-Jurassic period? See, India got separated from the Gondwana land and it started to drift towards the Eurasian landmass. ठीक है, ये Eurasian landmass के पास ये move कर रहा है. And for a once, you will find India was rather a largest island in the Indian Ocean. For once, like जब भी ये drift कर रहा होगा separate होकर, तो it was like a largest island in the Indian Ocean. अभी इसने क्या किया, drift करना start किया. So after the rate of drifting is somewhere around, you will find like 10 to 12 centimeters per year. ठीक है, जनरली ये रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग बहुत स्लो होती है. वैसे नॉर्मल प्लेट की तो 2.5 से 5 मीटर सेंटीमीटर से होती है. इंडियन प्लेट फिर भी फास्ट मूव कर रही है. So 10 to 12 centimeters per year. What happened somewhere like around in 71 millions of years ago, when India was located somewhere over in the Reunion Island region. यहाँ पे एक आइलैंड है that is under the name Reunion Island, और ये अभी आई गेस फ्रांस के कंट्रोल में है. Reunion Island in the Indian Ocean itself. अब यहाँ पर हुई कुछ प्रोसेस. This Reunion Island is what having, अब जियोमॉर्फोलॉजी में ही हमने उस टाइम में डिस्कस किया था हॉटस्पॉट वोल्केनो या इंट्राप्लेट वोल्केनो, है ना? तो इंट्राप्लेट वोल्केनो क्या होता है नमिता? ओके, चलो ठीक है. तो क्या होता है ये एक बार देख लेना, राइट? एक बार फिर से रीड करना कंटेंट को, क्योंकि डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन में फिर से ये चीज आएगी. ओके, सो व्हेन लाइक फेज सेकंड 71 मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, व्हेन प्लेट वाज एक्चुअली ड्रिफ्टिंग, यहां पर था एक हॉटस्पॉट वोल्केनो जिसको कहते हैं मेंटल प्लूम. तो मेंटल प्लूम की इसकी कनेक्टिविटी थी एट रियूनियन आइलैंड, अभी भी है इनफैक्ट. एंड एज सून एज इंडिया लैंडेड ओवर ऑन दिस रीजन, यहां से हुआ वोल्केनो इरप्शन स्टार्ट. That it gives rise to the formation of Deccan Trap. अब क्या है वो डिटेल में हम तब Deccan Trap में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर इंडिया जब पढ़ेंगे. So it gives rise to Deccan Plateau formation, Deccan Plateau, and then like after this, India still continue its motion. India ने फिर से उसकी continue motion रखी. What happened around in the third phase, around 60 millions of years ago, Dras volcanic arc was actually formed. Dras volcanic arc क्या था? So it was like when India as a continental plate struck with the Eurasian plate. तो क्या हुआ, देखो इंडिया का अगर शेप देखोगे, you will find this is how this shape it appears as. ठीक है, this one. अब ये वाला जो पार्ट है, this one a bit extended straight in the north, ये पहले स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा इसको. What happened there? It develops a strong, the continental interaction that it leads to. और यहाँ पे हुआ crustal melting. That melting of the crust, it led to the Dras volcanic arc. Dras is one of the coldest location, a place in India. This Dras now in Jammu and Kashmir. अब ये यहाँ पे start हुआ, and then what happened? Indian plate has then took a anti-clockwise bend. ठीक है, कि पहले जैसे ये कोलाइड किया और देखो प्लेट पे फिर अपने आप क्या हुआ, एक फोर्स आ गया. This force has led to a anti-clockwise bend of this plate. फिर ये the rest of the portion got connected with the rest of the Eurasian mass, है ना? जैसे if you want to visualize it further, अब देखोगे this part, it somehow got connected with and it remained this way, anti-clockwise rotation of this. Now in the next phase, now अब क्या हुआ, the sediments lying between these two land masses were facing a severe stress.
क्योंकि इनके बीच था 33 सी, यस, और उसके सेडिमेंटेशन जो रिवर्स ने, विंड्स ने, या जो भी प्रोसेस से आ रहे थे, दैट इज व्हाट ए जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या होता है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। सो टेथिस जियोसिंक्लाइन वाज देयर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, राइट, 3 स्टेप्स वर इन्वॉल्व, यू विल फाइंड अब हो गया प्रोसेस कंप्रेशन स्टार्ट। This compression has led to the phase 4 that led to the highest uplifted mountain range over in the Himalayas, that is under the name the Greater Himalaya, और जिसको हम बोलेंगे हिमाद्री as well। तो ये पहले इसका फॉर्मेशन हो गया, ट्रांस हिमालयस के रेंजेस का इस दास वोल्केनिक आर्क के टाइम में फॉर्मेशन है। देन व्हाट हैपेंड, फिर से प्लेट के बीच ड्रिफ्टिंग चल रही थी, दैट ड्रिफ्टिंग लेड टू द फेज 5 राइज ऑफ द लेसर हिमालयस, ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 30 to 40 मिलियन। ये फेज होगी देखो 70, ये होगी 60-65 मिलियन ऑफ ईयर्स, ये होगी एक 50-60 मिलियन ऑफ ईयर्स, ये होगी 30-40 मिलियन ऑफ ईयर्स, the lesser Himalayas, and then generally 10 to 20 millions of years before phase 6 was actually started. This phase 6 was like the upliftment of the Shivalik range. Shivalik was one of the least uplifted mountain range over in the Himalayas, और इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे शॉक कम होता जा रहा है। There you will find different types of transitional boundaries are being evolved, जैसे कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सेंट्रल बाउंड्री थ्रस्ट, एमसीटी एंड एमबीटी, और फिर वहां पे कुछ फ्यूचर जोन भी बने। तो कल इसके बारे में हम ना कंटेंट कुछ नोट डाउन करेंगे। अभी तो सिर्फ इसको इतना समझना है कि हिमालयन ओरोजेनी इज रादर इन दी 6 डिफरेंट प्रोसेसेस, यस, फेज में लिख सकते हो। मोर प्रोमिनेंट तो इसकी 3 से 4 फेज है, बाकी ये भी फेज इक्वली इंपॉर्टेंट है कि फिर ये फॉर्मेशन हिमालयस का कैसे हुआ, क्योंकि ये भी इक्वली मैटर कर रहा है, क्योंकि इट लेड टू द कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स अकॉर्डिंगली। सो टेल मी, क्लियर है दिस थिंग? यस, श्योर। इसका कल क्या करेंगे, हम कंटेंट नोट डाउन कर लेंगे और फिर हिमालयस के डिफरेंट रेंजेस विल बी नोटिंग देन ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक, इसके बारे की इंफॉर्मेशन। पीडीएफ शेयर होगा वैसे आपके साथ, बट वो कब होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, ये तो ले लो, ठीक है, चलो ये ले लो फिर। ये थोड़ा सही मैप नहीं है भैया, इसे डेक्कन प्लेटू को पेनिनसुलर इंडिया चाहिए, तो लिखा ही है। ये कल इस पे कुछ कंटेंट नोट डाउन करेंगे हम इन एडिशन। ओके, सो ये था देखो इंडिया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। कल हम फिर स्टार्ट करेंगे, सॉरी स्टार्ट इन द सेंस कंटिन्यू करेंगे विद द हिमालयास, देन विल स्टार्ट नॉर्थ प्लेन, और ये सारे सीक्वेंस है, देन विल बी कंटिन्यूइंग इट। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, देन है ना अकॉर्डिंगली एक बार कंटेंट गो थ्रू करना, पॉसिबल हो तो यूट्यूब पे वीडियो देखना इसका कि हिमालयन अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ है फॉर्मेशन। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, we'll be meeting then again on tomorrow.